everyone, welcome to our new session, and today we're going to discuss how we can help a shy child to be a super confident child. So first of all, I would like to bring this to a point that shyness is not a negative aspect of the child. Shyness is one kind of quality the child has. Though okay, if it is going towards the extreme side, we need to help the child to come up with some confidence to interact with the social gatherings and the other stuff in whatever is needed. बट हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे एक अलग सा कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम शाइनेस को ना एक बड़ा नेगेटिव एलिमेंट समझ लेते हैं. हम कहते हैं हमारे बच्चे में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बहुत शर्मीला है. सो दिस इज first thing we need to remember, that we don't need to label our child that our child is very shy, because once you have labeled the child तो वो एक उसके चारों तरफ एक शेल सा बन जाता है, तो वो उसको फिर ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, and you will not be able to do it very easily. and वो क्योंकि कहीं एफर्म हो जाता है चाइल्ड के अंदर भी कि हाँ मैं शाय हूँ, मैं नहीं निकल सकता बाहर. वो जो अगर एक चीज आ जाती है उसको ब्रेक करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. नाउ कमिंग टू दी थिंग्स हाउ वी कैन हेल्प दिस चाइल्ड to open for the some interactions or the communications out in the outside world. So first thing is here is to identify what is the child's interest and what is the child uniqueness. क्योंकि कई बार अगर हम उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं टू अ सर्टेन सिचुएशन जो उनको पसंद नहीं होती, तो वो वैसे ही चुप हो जाते हैं. दे विल नॉट इंटरैक्ट बिकॉज दे डोंट लाइक दैट गैदरिंग, दे डोंट लाइक दैट सिचुएशन. For example, if the child is interested in the arts and if I tell him to go and play football, he will be like, not of my interest and I'm not interested. But mom and dad has placed me in a football academy, so I have to go. But उसका जो एक participation level होगा वो बहुत कम होगा. So to understand the uniqueness of the child और उसके क्या interest है, that is very important. To know the fact कि from where this shyness is arising. Up now here this art journal concept really works well, because when you do an everyday exercise of like 5-10 minutes with your children, so you are able to map their likings, their interest, कि उनको दिन में क्या अच्छा लग रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है, क्या उनको मोमेंट बहुत पसंद आया, तो वो आपके लिए जानना बहुत आसान हो जाता है और आपके लिए गाइड करना बच्चों को then it becomes much easier. So secondly, I would say then whenever you're going out, taking your child, take time to talk about कि आप कहाँ जा रहे हो, what is the thing which is happening. क्योंकि sometimes it has been seen that the child is not comfortable with the all of a sudden situation being imposed on them. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक गैदरिंग में जाना है और बच्चों से इंटरेक्ट करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो रादर देन सेइंग कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, तुमको अच्छा लगेगा, तुम उनके साथ खेलना, तो मैं उसको दूसरी तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ. मैं ये कह सकती हूँ कि वी आर गोइंग टू अ गैदरिंग वेयर देयर विल बी एल्डर्स एज वेल एज द किड्स. यू कैन ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद द चिल्ड्रन एंड सी इफ it is of your interest, and if you like to communicate with them, might be somebody has good to share or you can share something with them. So that way the child becomes open and flexible to the idea that okay, I can go out and interact, right? So this works really well, and we have seen we've practiced this with many children, and it works in many different ways, but बहुत अच्छे से काम कर जाता है ये आइडिया कि आप कहीं भी बाहर जाएं तो उनको छोटी सी एक चाहे 2 मिनट की टॉक कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो उनके साथ उनके बात करिए. बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप इम्पोजिशन करेंगे कि आप वहाँ जाएंगे तो आप ऐसा करेंगे, बट आप सिर्फ उनको ये बताइए कि ऐसे है, ये पॉसिबिलिटीज हैं, आप इसको वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो वी विल टेक देम टू द एक्सपेरिमेंट मोड. नाउ दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके जो रोल्स हैं जब हम बाहर जाते हैं तो उनको थोड़ा सा हम लाइट रखें. मैंने ऐसे कि रोल्स को लाइट रखें मतलब होता है ना, एक सोचो कि हम किसी के घर जा रहे हैं, वहाँ जाके यू हैव टू बी लाइक दिस एंड यू हैव टू से हेलो टू एवरीबडी एंड यू हैव टू से थैंक यू टू एवरीबडी. वो हम बड़े रोल्स स्ट्रिक्टली स्पेसिफाई कर देते हैं चिल्ड्रन. सो द चाइल्ड गेट्स क्लोज्ड इन वन सेंस कि उसको लगता है कि वो उसको बाइंडिंग लगने लगती है कि मैं कहीं जाऊंगा तो आई बीन
commanded with so many things to do there, so I'm not feeling very comfortable with the situation, और मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो कटने लगेगा वहाँ से. He'll not feel comfortable or she'll not feel comfortable, and then it's like he or she would rather be like, quiet and sit in the one corner, and we don't want that. So if I say, rather than this, if we say, okay, we'll be meeting a family and it would be nice to greet them and say hello and see if you feel like, and try to communicate with them. Again, I would suggest you could do this, you can do, or you could just innovate something. Okay, let's say do one thing today, we'll do a handshake or a namaste in a different way. Would you like to try that? बच्चे हैं, उनको खेल पसंद है, उनको कुछ डिफरेंट फ्लेवर पसंद है, तो हो सकता है अगर आप कुछ एक डिफरेंट किस्म का नमस्ते सिखा दें उनको या हैंडशेक सिखा दें, तो दे वुड लव टू डू दैट व्हेन दे गो इन द फैमिली एंड दे interact. And that is the whole idea. We want them to come out of their shyness and start speaking, right? So this is one thing. And then the next point is, we can talk about them is like, if they are very shy, introduce them to the smaller groups. Bring them to the smaller groups where they can interact, rather than the very huge gatherings where they feel they are lost or they are not, or they have other people जिनके सामने वो बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो वो थोड़े से डर जाते हैं या चुप हो जाते हैं. तो वो एग्जाम्पल्स उनके सामने मत रखिए, ताकि वो एकदम से जो कोशिश भी करना चाहे वो भी ना करें. So we need to make that balance, and we introduce, if your child is very shy, we can introduce them to the smaller groups, then increase it slowly. So we talked about few things, major things here. First of all, we need to understand as the conscious parents that the shyness is not a negative quality. Shyness is one quality of a child, and it might have some reason that why the child is shy, or it might be the just a basic quality. उसको हम इम्पोज नहीं करेंगे, उसको हम फोर्स नहीं करेंगे टू बिकम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड. अगर इंट्रोवर्ट है तो उसको इंट्रोवर्ट ही रहने दीजिए. थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि जितना ज़रूरत है एक कम्युनिकेशन की उतना डेवलप हो जाए, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू टोटली चेंज एंड कन्वर्ट द पर्सनालिटी. We can help them to redirect a bit, but don't impose anything on the child. That has a very negative impact on their personal development. Then we said ki, okay, we will help them to connect with the situations, social situations in the smaller groups. Then in the we would make them aware that where we are going, and we'll talk about it so that they are well prepared where they're going to meet, and they're going to meet their friends, they're going to meet your friends, and they're going to meet or something else. And then we would strengthen their qualities, like if they're interested in arts, we're going to introduce them to the art group. If they're interested in the game, some sort of a game, you can introduce them to the game group so that they can start doing it. And we will go step by step. वो थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तो वो खुलते जाएंगे. So to break that shell, one has to be very sensitive, and I would request all the parents to experiment with these few things. They are very simple tips which you can practice every day. आप पार्क ले जाते हैं बच्चे को, तो थोड़ा सा कम्युनिकेट करके ले जाइए. उनको फोर्स मत करिए. कोई घर में आया है कि आप इनको खड़े होकर नमस्ते करिए या पोएम सुनाइए या थैंक यू बोलिए. उनको एक्चुअली उन इमोशंस को महसूस कराइए, ताकि वो उनके मन से आए. They come out with their own feeling to come and greet somebody, how they're feeling, are they excited. So we have to introduce small talks with them, communicate with them. Your communication with your child will build up everything, and definitely from their shyness they can become super confident in no time. So if you like this talk, click on the like button. If you've not subscribed us, subscribe us, and stay tuned us for many more tips. And if you have any questions, we'll be very happy to answer them. You can put them into the comment section or message us directly. For any other queries, you can reach us directly. Thank you so much.